When you're in Bangalore, there are so many hotel options to choose from. एक पॉपुलर होटल इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर इज द कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन हेबल। तो आइए और देखते हैं कि ये होटल कैसा है, इसके रूम्स कैसे हैं, व्हाट ऑल सर्विसेज दे प्रोवाइड और यहाँ का खाना कैसा होता है। My name is Karthik Kapil and welcome back to my channel. Let's go and check out the Courtyard by Marriott in Bangalore. Please don't forget to like, share and subscribe. For now, let's go and check out the hotel. Let's check it out. Namaskara and welcome to Namma Bangalore. We are outside the Courtyard by Marriott in Hebbal. ये एक 5-star property है which has 188 rooms and is located right next to the Nagwara Lake in Bangalore. The hotel is about a 30 minutes drive from the Bangalore International Airport and mostly caters to both business and leisure travelers. हम लॉबी के अंदर अब आ गए हैं और ये बहुत बड़ा होटल नहीं है साइज वाइज, क्योंकि ये होटल मोस्टली बिजनेस ट्रैवलर्स को केटर करता है, इसलिए जो लॉबी के डिजाइन एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन केप्ट वेरी सोबर एंड बिजनेस लाइक। As we move from the lobby towards the rooms, there is a small lounge or a sitting area with a coffee shop where you can get coffee, tea and light snacks. ये जरूर ध्यान में रखिए कि this is not the area where breakfast is served and this is just a sitting area for conversations and catching up on business meetings or friendly conversations. अब हम होटल के टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ पे इनका स्पा फिटनेस सेंटर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनका स्विमिंग पूल लोकेटेड है। The fitness center overlooks the lake so you can have a nice view if you're in the mood for a good workout. और चलिए अब स्विमिंग पूल को चेकआउट करते हैं। I personally just love swimming pools which are on the rooftop and this one surely does not disappoint. It has an infinity pool set up with some lounge chairs which are laid out for you. The water looks pretty clean. One small downside though is that the pool size is a little small. आइए चल के अब रूम को देखते हैं। So we were staying on the 5th floor in room number 521. And as we enter the room, you will notice the design elements of the room comprise of creamy and light shades of color and has a contemporary feel to it. Room का size overall थोड़ा छोटा है, so be wary of that. But cleanliness wise and overall ambience wise, it was quite fine. आइए चल के अब बाथरूम को देखते हैं। बाथरूम का भी डिजाइन एलिमेंट्स काफी कंटेम्प्रेरी हैं। There is a lot of glass work which is there. You have a sink in the center, your commode on the right. आपको मैरियट की स्टैंडर्ड अमेनिटीज और टॉयलेटरीज मिलती हैं। And you have the shower on the left which is enclosed in a separate glass panel. ओवरऑल बाथरूम का भी साइज काफी छोटा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए रूम का व्यू होता है, तो देखते हैं रात को व्यू कैसा दिखता है। अभी ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। So let's see what the view is like in the daytime. हमारा रूम 5th फ्लोर पे है, तो हमारे को ये साइड व्यू दिख रहा है और सामने लेक है जिसका हमें थोड़ा सा पार्शियल व्यू मिलता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अगर आप इस होटल में रहेंगे, आस्क फॉर रूम्स व्हिच आर इन द फ्रंट ऑफ द होटल एंड ऑन द हायर फ्लोर्स, जहाँ से आपको लेक का व्यू मिल सकता है। आइए अब चल के देखते हैं कि खाने में क्या है और इनका ब्रेकफास्ट कैसा है। We start with some fried items. These are gulgulas, puri, chili pakoda, medu vadas. Then different types of South Indian chutneys that you can pair your food with. गरम डोसे बन रहे हैं लाइव काउंटर पे, जहाँ पे शेफ हमारे क्रिस्पी मसाला डोसे बना रहे हैं अलग तरीके के। ये अलग अलग तरीके की टॉपिंग्स हैं जो आप अपने डोसे के साथ खा सकते हैं। सांबर, गुलाब जामुन, छोले, आलू भाजी, a complete North and South Indian breakfast affair. लाइव काउंटर कंटिन्यू होता है जहां पे हमें पैनकेक्स मिल रहे हैं। लाइव एग स्टेशन है टू मेक एनी टाइप ऑफ एग्स दैट यू वांट। Grilled tomatoes, potato wedges, chicken sausages and porky bacon to pair up a perfect continental breakfast if you're not fancying Indian khana. This is bisi bele baad, which is a spicy rice dish from Karnataka. साबुदाना और टापियोका खिचड़ी, रागी उपमा, चेन्नई सांबर, कैरेट इडली के साथ स्टीम्ड इडली, बेक बीन्स, वर्मिसेली या सेवई, congee for people who are seeking some Chinese fare, roasted corn जो खत्म हो गया है,
stir fried vegetables and stir fried chicken. अब आ गया हेल्दी सेक्शन जहां पे डिफरेंट तरीके के पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं लाइक गherkins, corn, capsicum, olives, sprouts, pickled baby onion, zucchini, hummus and lume which are Arabic dips, pepperoni, smoked salmon, chicken ham, 2 types of lettuce, some toppings and a cheese platter with different types of cheeses. Sweet spreads like jam and Nutella to add to your pancakes or desserts, then different types of ice creams, different toppings that can go with your ice creams और अगर आपके साथ बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे अटैक कर देंगे. Another healthy section comprising of fresh fruits. They also have Yakult probiotic drink and some flavored yogurt. Lots of fresh cut vegetables and bircher muesli also. Breakfast अभी खत्म नहीं हुआ है. This is veg clear soup, chicken clear soup, different toppings for your soup, dry fruits और उसके ऊपर पूरा cereal या cornflakes का section है with about 8 types of cereal. I have rarely seen such a large selection of cereals in hotels in India or abroad. इसके बाद यहाँ पे fresh juices section है जहाँ पे 4 तरीके के different fresh juices हैं. What is impressive is that all these juices are fresh and are not canned. Then we move to the pastry section जहाँ पे अलग-अलग तरीके के cakes, donuts, muffins, cookies, macaroons, अलग-अलग रंगों के macaroons, chocolate croissant, plain croissant, वो भी 2 तरीके के, and then the bread section which has different varieties of bread to your liking. So you must be wondering कि यहाँ पे रहने का cost कितना होता है. So the average cost of staying in this hotel is about 12,000 rupees per night, which is inclusive of breakfast and taxes. Do know that these prices can vary basis the seasonality. And that's it for this video. I really hope you like the content. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Your comments are always welcome. You can also follow me on Instagram. My handle is called The Good Life with Karthik. Goodbye for now. Take care of yourselves and see you in the next video.